10 हमारी अलग अलग टीम है जो खाली रहता है 10 न्यूज 10 न्यूज गजानन माली नहीं हम लोग तो न्यूट्रल है Good afternoon, everyone. As we draw the curtains on this remarkable international conference on disruptive technology, it is an honor and privilege to stand before you deliver the valedictory speech. Over the past 2 days, we have witnessed an incredible exchange of ideas, insights, and innovation that have the potential to reshape industries, societies, and economies around the globe. It is my pleasure to extend a warm welcome to our esteemed dignitaries for this evening. Their presence here today signifies not only their commitment to the advancement of technology and innovation, but also their dedication to supporting initiatives that derive potential change in our world. We welcome our Honorable Chief Guest, Professor J.P. Pandey, Vice Chancellor, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Our esteemed guest of honor, Professor Prerna Gaur, Campus Director, NSUT, West Campus, New Delhi, and Chair-elect IEEE India Council. Our respected guest of honor, Professor Anurag Singh, Associate Professor, Department of CSE and Dean Research and Consultancy at NIT Delhi. Our respected keynote speaker, Professor Arun Sharma, Dean Academic Affairs,
IGDTUW, New Delhi. Our respected keynote speaker, Professor Alexios Karas, University of Athens, Greece. Respected conference chair, Director GLBITM, Dr. Manas Kumar Mishra. Respected conference secretary, Professor and Dean Strategy, GLBITM, Dr. Sachank Awasthi. Respected conference chair, Professor and Head CSC, GLBITM, Dr. Sansar Singh Sir, Chauhan. YouTube Respected link Professor दीजिए. and Head Planning CSC, GLBITM, Dr. Ruth Pratap Oja. And respected deans and various heads of the departments, my faculty colleagues, scholars, and dear students, we are honored and privileged by the gracious presence of esteemed dignitaries among us. Give them a big round of applause. I, Payalgar, with Professor Bharvi Singh, welcome to you all in the valedictory ceremony of the Second International Conference on Disruptive Technology, ICTT 2024, organized by the Department of Computer Science and Engineering, GLPITM, Greater Noida, and technically co-sponsored by IEEE UP Section India. So without making you wait further, I will now start the valedictory session. I would request our Honorable Director, GLBITM, Dr. Manas Kumar Mishra, to welcome our Honorable Chief Guest, Professor J.P. Pandey, by presenting him a bouquet as a gesture of tribute. Thank you, sir, for being with us. I would now request Dean Strategy, Dr. Shashank Awasthi, to welcome our guest of honor, Professor Prerna Gaur, by presenting her a bouquet as a token of appreciation. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would now request our head of the department, Dr. Sansar Singh Chauhan, to welcome our next guest of honor, Professor Anurag Singh, by presenting him a bouquet as a token of respect. Thank you, sir. I would now request HOD MCA, Dr. Madhu Kaur, to welcome our distinguished guest, Mrs. Saroj Pandey, ma'am, as a gesture of gratitude. I would now request Dean Student Welfare, Dr. Mahavir Singh Naruka, to welcome our distinguished guest, Mr. Rajendra Sharma, as a gesture of gratitude. Thank you, sir. I would now request Head Planning, Dr. Ruth Pratap Oja, to welcome our distinguished guest, Dr. Arunesh Kumar Singh, Department of Electrical Engineering, Jamia Millia Islamia, New Delhi. Thank you, sir. I thank you all for being a part of this grand event at GLBITM. Every event needs the blessing of Ma Saraswati, the goddess of knowledge. It is a time for the auspicious lamp lighting ceremony, a tradition that signifies the illumination of knowledge, wisdom, and enlightenment. With all humility, I request to all the dignitaries to please come forward to light the lamp.
As we continue with our ceremony today, I have the privilege to extend a special invitation to our esteemed dignitaries to take their seats on the dais. Our respected guest of honor, Professor Anurag Singh, our respected guest of honor, Professor Prerna Gaur, our honorable chief guest of the day, Professor J.P. Pandey, respected General Chair, Dr. Director GLBITM, Dr. Manas Kumar Mishra, respected Conference Secretary, Dean Strategy, Dr. Shashank Awasthi, respected Conference Chair, Professor and Head CSC, Dr. Sansar Singh Chauhan. Sir and ma'am, please join us on the right. Give them a big round of applause. Thank you, everyone. Moving on, I would now invite our respected Conference General Chair, Director GLBITM, Dr. Manas Kumar Mishra, to bring the conference to its conclusion. Thank you, ma'am. Good afternoon, everyone. When we begin something, eventually it comes to a conclusion, and we are here today to celebrate the success of this two-day conference and to also dwell upon what kind of achievements that we have gathered over last 2 days. I welcome all the dignitaries on the dais and off the dais to this valedictory function on behalf of the entire GL Bajaj fraternity. Honorable Vice Chancellor of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow, Professor J.P. Pandey, the Honorable Chief Guest of today's function. Thank you, sir, for finding time from a busy schedule and grace this occasion. I welcome you on behalf of the entire team. Your presence is going to make a big impact, and just to give you an insight of what you can expect during his talk is, we both were there in another function just before this, and all those who have been part of the inaugural session might have listened Professor Chaudhary talking about the disruptive technologies we talked about as a transformative technology. Professor Pandey asked me the first question, where it is going to be disruptive. And with that thought process, I leave it to you so that when you will listen to him, you will realize the kind of critical thinking which Professor Chaudhary brought in the inaugural session is going to be continued in the valedictory as well. So it is really indeed pleasure and honor to have you here. Thank you for that opportunity. It's my proud privilege to welcome the guest of honor of today's valedictory session, Professor Prerna Gaur, ma'am. Thank you for finding busy time, time out of your busy schedule to grace this occasion. And what a wonderful coincidence that this particular function has representation from uh, the highest authority of AKTU. At the same time, when we are celebrating the technical sponsorship of IEEE in organizing this conference, we have the first chair, woman chair, elected of IEEE Indian Council present here to bless us with this particular occasion. So it's a wonderful coincidence that two stalwarts are present here. Thank you, ma'am, for gracing the occasion. I extend a warm welcome to Professor Anurag Singh, Dean R&D of NIT Delhi, uh, another guest of honor in today's function. Thank you, sir, for finding time and gracing this occasion. Your insights are going to make stimulate the thought process so that when we conduct the third edition of this conference, we should take forward your suggestions and make it implementable when we come back next year. And that's is an expectation of this gathering from you. And I'm pretty sure that with your expertise, you are going to make a great impact. I also extend warm welcome to
Mrs. Saroj Pandeman. When we say we have this observation always, every successful man, uh, probably behind every successful man, there is equally talented woman. And ma'am happens to be the woman behind the success story of Honorable Vice Chancellor, sir. So thank you, ma'am, for again gracing this occasion. And just to avoid the gender biasness, you know, I should say that behind every successful woman, there is also an equally supporting man. So I welcome Rajendra ji to this function. She happens to be the guiding force behind Prerna Lord Madam's success as well. Along this side, I welcome all my colleagues from the external, from academia and otherwise who participated as well as graced this occasion for with their presence. Um, I can see Dr. Salas is here, right? Yeah, and uh, you know, and few names I may be forgetting. Pardon me for that. But I welcome everyone from the external academia partners to be present here. Your presence shows that we may be divided in terms of the institute, but as an academia or as a researcher, we come together to dwell on the technology advancement and then try to make an impact to the society. That unity is more important than the way we work. So our workplace may differ, but the thought process are similar. That's the Thank you for gracing this occasion and making sure that we stay united irrespective of the organizations we belong to. I also welcome all my fellow colleagues who has been supportive throughout the uh, from the conceiving the idea to conduct an internal conference. It takes a lot of energy from many of us, and thank you for all those support. And I welcome you to this valedictory section, a session where we celebrate the success. And all my faculty colleagues and fellow students who were working at back to make sure that everything at front looks pretty organized, pretty balanced. So I thank you all on this occasion as well as welcome you to this valedictory session. For the last 2 days, the discussions have been very positive and we got a lot of feedbacks from various sources that the discussions were quite fruitful. Hopefully, when we reflect upon the achievements of this particular conference, we should be able to draw inspiration from the success stories and also should introspect to find out the faults that the points that were left unticked and probably next time when we'll come back and hold this conference, we will ensure that we make everything in the best possible way and in an improved version, we will welcome you all again. With that note, I welcome each one of you to this occasion and thank you for the success of this, making this international conference a successful one. And thank you for all your support. Have a great day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir, for the details and your kind words. Next, I hear Professor Finance CSC Dr. Sansar Singh Chauhan to deliver the concluding remark for the conference. Honorable Chief Guest of the Day, Guest of Honor, Director Sir, Dean Sir, guests from other institutes, guests from industry, keynote speakers, session chair, authors, deans, HOD, faculty members, and my dear students. Very good afternoon to you all. It's my great pleasure to present the report of Second International Conference on Disruptive Technology, ICDT 2024, organized by Department of Computer Science and Engineering, GL Bajaj, and technical co-sponsored by IEEE UP section. The theme of the conference was disruptive technology, and it was divided into the 5 tracks:
artificial intelligence, AR/VR, blockchain, 3D printing, IoT. In this conference, we received 1113 research papers, which includes 54 research papers from USA, Indonesia, Jakarta, Saudi Arabia, Philippines, and other countries. Additionally, we received the paper from premier institutes like NITs and IITs. All research papers were checked for similarity index by Authenticate. Only paper less than 15% similarity index were considered for the presentation. All research papers were blind reviewed by the 3 reviewers. In the review process, 508 reviewers was involved. Out of 1113 research paper, 300 paper was accepted for presentation, 299 paper were presented, reflecting an acceptance rate of 27%. The presentation of accepted paper were conducted in hybrid mode, offline and online. Yesterday, on 15 March, in the morning, 16 offline sessions were conducted, in which 128 papers were presented. These sessions also include 2 special sessions, Women in Engineering and IEEE Young Professionals. In yesterday afternoon, 2 offline sessions, 13 online sessions, and 21 poster presentations were conducted, in which 97 papers were presented. Total, today, 10 online sessions were conducted, in which 74 papers were presented. All 299 accepted papers are eligible for submission to the IEEE Explore and will be indexed in Scopus. There are 4 different categories for the award. First one is the overall best paper award. Best paper award in IEEE Women in Engineering category. Next award is best paper award in IEEE Young Professional category. And there was a poster presentation. In that, we are giving the 3 awards for that. So by seeing the immense response in this conference, we would like to organize the 3rd International Conference on Disruptive Technology, ICDT 2025, in 2025. I would like to thank you all for making this conference a grand success. Thank you. Thank you very much. Moving on, I would like to introduce our guest of honor, Professor Anurag Singh. Dr. Anurag Singh is currently Associate Professor in the CSC Department and Dean Research and Consultancy at NIT Delhi. He has received his PhD from IIT Kanpur. His research areas are network theory, dynamics of network, opinion dynamics, epidemic modeling, video captioning, and many more. Dr. Anurag Singh has taught courses ranging from the introductory level to specialized courses in computer science. Currently, he is mentoring masters and undergraduate students at NIT Delhi. In addition, he has supervised many PhD students. He has approx 100 publications in leading international journals and conferences and several DST-funded projects and startups. So without making you wait further, I would like to invite Sir to enlighten us with his profound reflections and visionary guidance. Sir, please. Thank you for the introduction. So, Honorable Vice Chancellor AKTU, Professor Pandey sir, Professor Pednabor NSUT, Professor Arun from IGTQW, and Professor Manas Kumar Mishra, Director GL Bajaj, Professor Sansar Singh, Chair of this conference, Professor Shashank Avasti, Dean Strategy. So first of all, thank you for inviting me as a guest of honor. And actually, when I am sitting here, so I was seeing the last bench, because always you can understand the success of any program by seeing the number of counts over the last rows. So it means this conference is very much successful because the participation is very high. I hope that you have done same participation at the time of paper presentations. So we should first understand the meaning of conference. What is the objective of conference? So basically, initially they started
the term as a meeting. So when we can take the example of AI. So initially AI was evolving, when AI was evolving in the 1940s, 50s, at that time, everyone is working in the direction of AI after the Turing test. Then they made a group and they decided to meet every year for discussing the progress done in the AI field. So they do meeting basically. So that conference basically called Triple AI. So after this meeting, they discuss what work they have done, and then ideas are exchanged and they are going in that way. But after some time in the 90s, AI will go down into the AI has basically go down into the cold period. Cold period means whatever they were expecting and doing, it was not in success. So they still doing the meeting, exchanging the ideas, and now we know that after 2000, neuron was successfully developed, neural network was successfully developed, and then they again can do the various things to the AI, and now all of us know about the use of AI in every area. So the idea of the meeting is this, to exchange the ideas. So now people think that how we invite the people who should be the participant of this conference or meeting. Then they told, please share some research article and we will review, and if it sounds suitable, then we will allow you. So it is basically the major aim of the conference to exchange the ideas in the relevant area or field. So I hope that all of you are successful in such aim of the conference. And secondly, here we get the advantage after the conference. We will get some publication in some publishing house like IEEE, Springer, or Elsevier. But you will be surprised, nowadays very big conferences are there. They ask only for the abstract. Abstract means summary of papers in 1 or 2 pages, and they do only the presentation, not any publication. And these are many much more successful conferences. So why? Because they are working over the core idea of the technical meetings. So this is one aspect of the conference. So definitely congratulations to you for organizing the successful conference. Second thing is that where research is going nowadays. So nowadays we and even government also suggesting not to publish the research paper. Whatever research you are doing, it should go into the industry also. So that is called translational research. So now whatever you are doing, it is not going in the form of paper and go into the archive. Thing is that whatever you have done, are you able to develop some product or prototype? And if you are able to develop, can you transfer the same technology to the industry so that they can use? So because of this, most of the funding government is doing in the direction of translation research or product development. So I have seen one incubation center in your institute, and it is very good, and I think you got some handsome grant for this, and you established it, and it is very good thing. You can invite the young, brilliant mind. They can come and share the idea. If you find that idea suitable, maybe most of the students will be in the ideation stage. They are not able to develop any product. They need some fund support. So these type of incubation center always invite you to present your ideas and give the grant. So it is very good thing. And we should record every development, whatever development will be done during this startup. So definitely the next important task after the giving grant to the students, second important thing, how to do the marketing of that product. Definitely you can make a product, it is very good and it is very fine. But how will you sell this product into the market? This will be the second question. Otherwise, you will not get the grant. If you will not satisfy the grant provider, Shark Tank is the example. They ask all the things, then they will allow to give some grant. So now we have to think in that direction also. And
the last point is that we are seeing lot use of AI in every area. And all of you heard one term, responsible AI. I think all of you heard about that. Now we are talking about responsible AI. Why this responsible word is coming with AI? Because now we are seeing some of the misuse and some of the mishandling by using this AI applications. So in the case of responsible AI, we should go ethically when we are deploying some AI tools. So what I am trying to request you, so when you are using any technical thing, you are writing anything, please try to avoid this AI tools when you are working in the direction of R&D. There are two things. Actually, if you will use AI tools, definitely it will go into its archive. They will record all the material with whatever you are putting over there. So and that material will also be used to compare the further AI related prediction or AI related writing of that document. So ethically, if you are using any AI tool, then first of all you should cite that AI tool in the references. You know this thing. You should write you have used this AI tool for writing this publication or checking the English correction or whatever. But everyone advised that at the time of R&D, please avoid to use the AI tools when you are writing UG projects, when you are writing MTech projects, when you are writing PhD thesis. Try to avoid AI tools. And when you are framing the problem, doing the literature survey, then you can see what literature has been done. But don't be dependent over that. Why? Because the archive of such like ChatGPT, if you will see, so archive of the available data is limited. Maybe it's up to some years. So after that, you will not able to see the contents. So this is the one more thing. So now, I want to discuss with you. There is a term which is called computational model. Okay, so what is computational model? So nowadays, see who is intelligent nowadays, who is earning money? The person, those have problem. Those know the exact problem. Because you will see in your surrounding when you will do some startup presentation, everybody will come in front of you that farmers are very poor, so we will do something for the farmer. And this is my idea. And after that, the life of farmer will become happy. So you should ask only one thing in the case of in such case to the student. Have you ever met with the farmer? Do you know the actual problem of the farmers? So mostly students will answer no, we never met with the farmer. So how can you define the problem? So problem can be societal. So once you are in the touch with society, are in touch with the users, you are reading the newspaper, you are listening the news, then you will be able to find a problem. So once problem is found, then definitely as a technical person, that formula can be converted into the computational model. So once it will be converted into the computational model, then definitely people may apply some algorithm, AI related trainings of training model and can develop the application. So the major focus we should have over to find the problem which is societal and need to solve. Okay, so for after these words, I want to stop my speech. So now I again congratulate to hold this conference team, second international conference on disruptive technologies, for organizing this successful conference, and thank you. Thank you, sir, for such a great informative speech and kind words. Moving on, now I would like to introduce our next guest of honor, Professor Prerana Gaur, Director and Member Secretary, Atal Incubation Center and Technical Business Incubator of NSUT. She has elected as first women chair, elect 2023 IEEE India Council, electrical proof consultant of Western Railway 300 crore project to speed up the tracks.
She has 6 years of industry experience and 28 years of teaching experience in Delhi College of Engineering and NSUT Delhi. Ma'am has published more than 175 research papers in international journal and IEEE conference. She has supervised 16 PhD students. She is also member of various committees of AICTE, DSC, NBA and UGC, board member of BOS and recruitment committee of various universities. She has won many awards like the Award of Women of the Decade in Academia presented at Women Economic Forum, Maulana Abul Kalam Azad Excellence Award in Education, award from IEEE President, IEEE Outstanding Branch Counselor and Branch Chapter Advisor. So without making you wait further, I would like to invite ma'am for her words. Please, ma'am. Thank you for introduction. Honorable Vice Chancellor AKTU, Professor J.B. Pandey. Honorable Director, Professor Manas Kumar Mishra, GL Bajaj Institute. General Chair of IEEE Conference, Dr. Sansar Chauhan. Dr. Anurag Singh, Dean, NIT Delhi. Dr. Awasthi, Dean, GL Bajaj Institute of Technology and Management. Professor Arun, IGTQW, Professor Arunesh, JMI, Professor Naresh, GL Bajaj, Madam Pandey from AKTU, all deans, HODs, participants from all over India for this conference, and faculty and students of GL Bajaj. It's my pleasure to stand before you on this conference on disruptive technologies. This is in second edition at GL Bajaj, sponsored by UP section. It's an IEEE international conference on disruptive technologies. So when we talk about disruptive technologies, these are the technologies which have changed the world. When we talk about first invention that changed the world, it was wheel invented thousands of years ago, and that changed the life of mankind. Then came the bulb, and with the bulb also we got sudden change in the lives. In the last century, in the end, we got internet, and then mobile, and with mobile, everything has been changed now. Education system is also changed with the help of mobile and computers and internet. Now we have ChatGPT. Dr. Anurag told about ChatGPT, unethical use of ChatGPT. That we have the technologies which have changed the world, but we should think the positive aspect of the changing technology. I can see the difference with the change in technology with ChatGPT. In the last 6 months, when I am guiding students for the last 25 years, and everyone used to come with some idea, and next 6 months they used to do some positive and hard work and dedication with dedication their project. But now students are thinking that in the last day we can produce a project report, and we can prepare a PPT, and we can also prepare a code for any problem, and we can present it. But when you come before the professor with such reports, he can catch you easily if he has once used ChatGPT. So I request all participants who are students and researchers, please ethically use ChatGPT. Our next 10 or 20 years will be for those who has learned how to use that ChatGPT for positive difference in life. Uh, disruptive tech, coming back to disruptive technologies that have changed the world. So bulb was the second invention which brought many changes in life. Now we talk about IEEE. IEEE was started in 1884 by Thomas Alva Edison, who actually invented bulb. So from 1884 to 1963,
It was in US only. In 1963, it came to India, and India Council and Delhi section was formed in 1963 and 1970, between 1963 and 1974. And since then, we have now 13 sections all over India. And UP section is one of the section where GL Bajaj is under UP section. It has a larger territory, and IEEE conferences are approved by UP section. So I congratulate GL Bajaj for successfully conducting this conference, sponsored by UP section second time. And it when it is IEEE conference, it has certain advantage to the authors that these papers are Scopus Index papers, and these are with reviewed papers, peer reviewed papers, and are published on Explore if you successfully present it in the conference. And it is 300 papers were submitted, and out of those 295 physically presented. That is again the top. We can congratulate the organizing team under Sansar Singh Chauhan. That team has worked tremendously to review such papers and brought 300 researchers on such platform under IEEE umbrella, and they are meeting here physically and networking among themselves. Actually, IEEE provides that platform where we can directly connect to a larger gathering through such conferences and congresses. Uh, so acceptance rate was 27%. That is the actual result of regressive reviews which you might have done with your team, and I hope that you will be regularly organizing such conferences with the sponsorship directly taking from society, so that expenses will be reduced for the colleges. So try to get those sponsorships, technical sponsorship from the societies which exist in UP section. Directly you can talk to the chairs of those societies. If they agree, so you will be actually released from that additional fee. And I am the volunteer of IEEE for the last 25 years, and volunteering IEEE has changed my life. I was not able to speak to the large gathering which is here today 24 years ago. It has given me the platform through which I have learned a lot, and in 25 years, finally I got the position of chair elect. Uh, although it was through elections, but I got the support from all of you who were the IEEE members, and this was a great recognition I got in 25 years of IEEE volunteering. Everyone who is IEEE member should come forward to organize some activities, to coordinate such activities, and that will immediately give you the recognition because immediately you are connected to a large uh, uh, gathering, or you can say the same peer group, and through email or through physically also. So it gives recognition and helps in your career development, whether you are a student or you are a professional or you are a faculty member. So organize such events under IEEE umbrella, and congratulate to the team. Thank you so much for inviting me here. Thank you. Thank you, ma'am, for such kind words. Next, with great pleasure, I would like to introduce our Honorable Chief Guest of the Day, Professor J.P. Pandey, sir. Though your reputation precedes you, sir, permit me to formally introduce you. Professor Jayaprakash Pandey is the Professor of Electrical Engineering at Kamala Nehru Institute of Technology, Sultanpur, and currently Vice Chancellor of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Professor Pandey is an architect of various reforms in academics, examination, and administration in different universities and institutes. His research interest includes AI, neural network applications in power system state estimation and data mining,
I would like to invite you, sir, to enlighten and inspire our attendees with your expertise. दो दिन के दूसरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर जीएल बजाज इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित किया गया है, इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर प्रेरणा गौर जी, प्रोफेसर अनुराग सिंह, डीन एनआईटी दिल्ली, डॉक्टर मानस मिश्रा जी, डायरेक्टर जीएल बजाज, कॉन्फ्रेंस चेयर प्रोफेसर समीर जी, प्रोफेसर अरुण, प्रोफेसर शशांक अवस्थी, डीन इनोवेशन, संस्थान के सभी फैकल्टी मेंबर्स, डीन्स, पार्टिसिपेंट्स और डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जीएल बजाज और IEEE जो इसको को स्पॉन्सर कर रहा है, उनको बधाई देना चाहता हूं कि ये एक अच्छी पहल है और ये दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। शायद पिछली बार हम वर्चुअली जुड़े हुए थे, उस समय ये भी कॉन्फ्रेंस थी। इसके लिए IEEE को भी और जीएल बजाज की पूरी जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम है, जिनके नाम नहीं लिए उनको उनसे क्षमा चाहता हूं मैं, क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं वो इतने लोग जो नाम लिया है उसमें नहीं है। आप सभी को भी ढेर सारी बधाई, और आपकी जो मेहनत है वो दूसरे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप लोग लेते हैं, वो तो कस्टमरी होता है, ये नाम तो लेना ही है जो स्टेज पर बैठे रहते हैं। तो वो चीजें हैं, ये फॉर्मेलिटी का हिस्सा है, तो वी विल हैव टू डिटैच विद दिस। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पर आपने आयोजित किया और दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है और बहुत ही अच्छा पहल है। इससे पहले जैसे अभी बताया, इन्होंने 300 पेपर आए, 300 पेपर में से 27% एक्सेप्टेंस रेशियो रहा। दिस इज गुड थिंग, बहुत अच्छा है। लेकिन इन पेपर पब्लिकेशन और ये जो एक्सेप्टेंस रेट है स्कोपस में प्रिंट होता है, थोड़ा ये चीजें प्रैक्टिकल हम लोगों को सोचनी पड़ेगी। इससे भी थोड़ा हमको आगे सोचना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है। हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी भी बताया ना मैडम ने कि बल्ब और IEEE के जो फाउंडर है, बल्ब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल हो सकता है उस समय के लिए, बट आज के लिए नहीं है। मैं इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 2047 में विकसित भारत बनेंगे, है ना, बोलते हैं सभी लोग, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सभी ये चाहते हैं कि हम देश के हमारा देश विश्व को लीड करें। अभी मैंने पूछा पंकज अग्रवाल जी क्या विदेश गए, तो जब ये विदेश पहले लोग जाते थे तो उस समय की जो क्रेडिबिलिटी थी इंडिया की, इंडियंस की, वो आज क्रेडिबिलिटी बदल गई। और ये क्यों बदली है? क्योंकि पहले भी हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे तब हम लोगों ने सभी ने पढ़ा है। हम सोने की चिड़िया क्यों पढ़े थे? 400-300 साल पहले अगर आप जाएं तो हमारे देश का 25% जो विश्व का जो 25% ट्रेड होता था वो हमारे देश से होता था। कोलंबस और वास्को डी गामा दोनों ने सी रूट ढूंढा ट्रेड का, मतलब देश के ट्रेड रूट को ढूंढने के लिए विदेशी आए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सामान जाते और कुछ गलतियां रही होंगी। अब आप 1919 पे आ जाओ सीधा, क्योंकि वहां से हमारी स्वतंत्रता का ईयर शुरू होता है। हमने पूर्ण स्वराज की मांग करी 1919 में, 1938 तक है। तो जब 1919 में हम आए तो हमारा जो वर्ल्ड का जो शेयर था ट्रेड का वो 4%। जो भी कारण रहा होगा, कमियां गलतियां सबकी रही होंगी, सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ डिस्कस 4% ट्रेड है और आज की डेट में 4.8 के करीब हमारा शेयर है वर्ल्ड में, और हमारा देश 140 करोड़ का है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हम 5वीं विश्व की अर्थव्यवस्था है और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुछ दिनों में हम लोग 3री अर्थव्यवस्था हो जाएंगे विश्व की। आज हमारी जो
अर्थव्यवस्था है उसका जो अगर पिछला रोड मैप आप देखो तो पहला 1 ट्रिलियन अचीव करने में स्वतंत्रता के बाद हमें 60 साल लगे। इंडिपेंडेंस के बाद 60 साल के बाद हम 1 ट्रिलियन पर गए और अगला जो दूसरा ट्रिलियन आया वो 12 साल में आया और तीसरा जो ट्रिलियन आया जिसमें हम लोग कहते हैं 3 ट्रिलियन हो वो 60 इतने साल लगे और तब हम कहे कि हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में पड़े। अब हम विकसित भारत होंगे 2047 में, हर आदमी चाहता है और हम काम भी कर रहे हैं। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज मानस जी ने 25 की भी घोषणा कर दी है, तो ये निश्चित तौर पर ये एक रोड मैप है। हर आदमी अपनी तरफ से प्रयास करता है। आपने देखा होगा जब रामेश्वरम में पुल बन रहा था तो एक चींटी भी, एक गिलहरी भी अपना प्रयास कर रही थी, अपना एबिलिटी। तो सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और ये उसी के लाइन में चल। तो आज की डेट में हम लोग, हमारी जो इकोनॉमी है, हम 5 में कैसे आएंगे? अगर हमको विश्व को लीड करना है 2047 में, तो हमें अमेरिका से ऊपर आना है। आज हमारी स्थिति ये है कि हमारी जो जीडीपी है वो इस समय 4 ट्रिलियन के करीब, 4.1, जिसे कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि हम इसे आने वाले में हम तीसरे नंबर, कैसे तीसरे पे जाएंगे? हमारे से ठीक ऊपर जापान है 4.28 ट्रिलियन और उससे ऊपर जर्मनी है 4.32। तो ये दोनों का जो ग्रोथ रेट है और हमारे देश का जो ग्रोथ रेट है, ये दोनों में हम अचीव कर लेंगे। इन दोनों को तो हम पछाड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम बन जाएंगे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था। अगला जो रोड मैप है वो क्या है? अगला जो है पड़ाव वो है चाइना। चाइना का कितना है? 19 ट्रिलियन। हमारा गैप मान लो हमने 4.32 से ऊपर कर लिए, जर्मनी से ऊपर, और चाइना 19 पर है। तो जो उसकी ग्रोथ है वो और जो उसका ग्रोथ रेट चल रहा है और हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है, उनका नेगेटिव चल रहा है, हमारा पॉजिटिव चल रहा है, तो हम उनको भी मान लो खींच खांच के कर दिए। अगला जो नंबर है वो अमेरिका का है, वो उनकी 29 ट्रिलियन 29 ट्रिलियन 29 ट्रिलियन। तो ये बड़ा कठिन टास्क है और आप जितने भी रिसर्चर लोग हैं, जो लोग पेपर पब्लिश कर रहे हैं, जो लोग पेटेंट कर रहे हैं, उनको मैं मतलब उनके एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में वो कैसे ट्रांसफॉर्म करे, वो आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट। अब मैं आपको इसके पीछे सिनेरियो बताता हूँ। आज अगर आप 6 कंपनियां हैं जो 1 ट्रिलियन की कंपनी है। फेसबुक का कितना जीडीपी है मालूम आपको? अमेरिका के 29 ट्रिलियन में उनका शेयर कितना है? करीब 2 ट्रिलियन का शेयर है फेसबुक का। आप सोचिए फेसबुक में कितने कर्मचारी हैं? 2 लाख कर्मचारी हैं और वो 2 ट्रिलियन का शेयर दे रहे हैं उनको, अपने अमेरिका के 29 ट्रिलियन। गूगल का 3 ट्रिलियन है, हम 4.1 पर हैं, हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है और गूगल में कितने एम्प्लॉय होंगे? उनकी 3 ट्रिलियन। हमारे एक 1 ट्रिलियन क्लब बना हुआ है, उसमें कंपनियां हैं, उसमें माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें गूगल है, उसमें एनवीडिया है, अमेजॉन है, 5वीं IBM है। केवल 6 लोग हैं उस क्लब में। ये 1 ट्रिलियन कंपनियों का जो वर्ल्ड का क्लब है, उसमें केवल एक कंपनी अमेरिको, जो सऊदी अरेबिया की रिफाइनरी कंपनी है। बाकी सारे स्टार्टअप्स थे, इनोवेटर थे, इनोवेशन के बाद इंक्यूबेट किया और स्टार्टअप बनके आज वो इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि हमारे देश की जीडीपी के बराबर उनकी जीडीपी है। उसमें केवल एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है, बाकी सब हमारी। ये क्यों है? वो क्यों इतना पैसा? एप्पल है, सॉरी, उसमें एक एप्पल है 6 में। तो इतना क्यों है? क्यों उनके पास पैसा ज्यादा आता है, हमारे पास पैसा नहीं है? हमारी जो कंपनियां हैं वो सर्विस सेक्टर में लीड कर रही है वर्ल्ड। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। जब कभी किसी भी पेपर का प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट पेटेंट होगा, आज एप्पल ने अपने प्रोसेसर को पेटेंट करा रखा है और एप्पल के जो भी जीडीपी बढ़ रही है उनकी, उसमें शेयर अपना है कि नहीं है?
हमारे देश में हर आदमी एप्पल का फोन लेके घूम रहा है। तो एप्पल के जो ग्रोथ रेट में हमारा भी योगदान है। हमारे लिए दिक्कत ये हुई कि हमने प्रोडक्ट नहीं बनाया, हमारे को प्रोडक्ट पर काम नहीं करा हमने, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के समय तो हम गुलाम थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो जब मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन आया वर्ल्ड में, तो हम तो इंग्लैंड के साथ थे, तो हमारी जितनी भी चीजें थी वो लेके चले गए। हमको जो फील्ड मिली वो स्वतंत्रता के बाद मिली। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप इसमें प्रोडक्ट पर फोकस करना और पेटेंट कराना। पेटेंट नहीं होगा हमारे पेपर का कोई मतलब नहीं। हमको कैश में प्रमोशन दे देगा, हमको रिकॉग्निशन दे देगा। आज की डेट में अगर समाज की समस्याओं को हम अपने रिसर्च में नहीं लाएंगे तो देश का विकास ज्यादा तेजी से नहीं होगा। और जो आज प्रयास आप लोग कर रहे हैं, इसमें निश्चित रूप से कुछ चीजें और आप जोड़ लें कि ये प्रोडक्ट बनना है और ये पेटेंट कराना है, और तब देखिए फिर आपको कैसे आपके पास एक प्रोडक्ट आ जाए। आज इन्फोसिस को क्यों पेटेंट डिवीजन खोलना पड़ा, विप्रो को पेटेंट डिवीजन खोलना पड़ा है। एक चीज और बताना चाहता हूँ, विंडो 95 आप लोग उस समय कुछ लोग पुराने होंगे, पहले MS DOS का ये 3.0 वर्जन था और इसको 95 में लेके आए थे माइक्रोसॉफ्ट। विंडो 95 ने बिल गेट को बिल गेट बना दिया, माइक्रोसॉफ्ट को माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बना दी। और इस विंडो 95 को डेवलप करने वाले टोटल 9 लोग थे, 9 में से 8 जो है फर्स्ट जनरेशन इंडियन थे। केवल केतन मेहता जो थे वो सेकंड जनरेशन इंडियन थे, उनके पिताजी चले गए थे और फिर बाद में पढ़ने चले गए वो रहे। तो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम माइक्रोसॉफ्ट बना सकते हैं, वो आप लोगों के अंदर है। आपने पेपर इतना पढ़ा, मैं इसलिए आपको टेक्निकल चीजें बता रहा हूँ क्योंकि वैसे ही आप 1.5 दिन टेक्निकल चीजें बहुत सारा, और किसी टीचर को सिखाना बड़ा कठिन होता है टेक्निकल, और वैसे बोर होने लगता है सुनता नहीं। अब आप आइए आप डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल मैं आपको मेरे साथ घटी घटना बता। 1987 में मैंने बीटेक किया, पहला जॉब मेरा लगा HCL कंप्यूटर में 87। उस समय जस्ट वो 10D से 80 पे हाई थे हम। एडवांस टेक्नोलॉजी 386 था और फिर बाद में 486 आया, फिर बाद में वो पेंटियम 1 में कन्वर्ट। तो HCL में नौकरी लगी, लखनऊ में पोस्टिंग हो गई, बीटेक करने के बाद नौकरी लगी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल का ग्रेजुएशन था मेरा और कंप्यूटर में नौकरी लगी। तो उस समय तो सब कंप्यूटर ब्रांच नहीं थी, तो हम लोगों ने भी कुछ कंप्यूटर पढ़ा था, समझाया। तो हम लोग गए, अच्छा मार्केटिंग में लगी, टेक्नोलॉजी में टेक्निकल चीज में लगी होती तो कम से कम कमरे में बैठ के कुछ होल्डरिंग कर रहे होते। तो हम लोग गए लखनऊ में, एक बैंक है हजरतगंज, जो लोग लखनऊ गए, हजरतगंज में एक बैंक का बहुत बड़ा ऑफिस है, KD सिंह बाबू। तो उनके चीफ मैनेजर से हम 3 लोग गए मिलने के लिए कि आप कंप्यूटर खरीदना है। तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर, वो चाय वगैरह कुछ नहीं पिलाए, कंप्यूटर खरीदना है कि नहीं खरीदना कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कंप्यूटर तो समाज का दुश्मन है, ये तो हम अनएम्प्लॉयमेंट ले जाने वाला है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने वाला है, एम्प्लॉयमेंट तो चला जाएगा। और इतना डिस्करेज कर दिए कि हो सकता है कि उस समय हमने अपनी फील्ड बदल दी। 15 दिन के बाद मुझे लगा यार कहाँ चले गए, जहां जाओ वो लगता था कि हम समाज के दुश्मन हैं कि हम कंप्यूटर खरीदने के बाद। उसमें महंगा भी था, हमारी मेमोरी चिप जो है वो महंगी थी, स्पेस हार्ड डिस्क महंगा था। आज की डेट में आप आज 1 TB की हार्ड डिस्क अपनी जेब में लेके चलते हैं, पहले हार्ड डिस्क के 1 TB का टीवी था भी नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, बड़ी बड़ी अलमारियां जो गोदरेज की होती है उसके अंदर लगे रहे। इसी देश में 2 बड़ी बड़ी स्ट्राइक हुई अगेंस्ट कंप्यूटराइजेशन, एक बैंक ने की और एक रेलवे ने। और आज सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर का ये दोनों लोग। और एम्प्लॉयमेंट कम नहीं हुआ। डिसरप्टिव चीजें, डिसरप्टिव हमारी सोच का फर्क। अब आप देखिए 3 फेज में आज की डेट में डिसरप्टिव चल रहा है। पहला फेज जो है वो डिजिटल का है, हर चीज डिजिटल हो रही है। आप का जो
पेपर है बिकम पेपरलेस, आपका करेंसी बिकम करेंसी लेस। ठीक है, अब जैसे मान लो पेपर बिकम पेपरलेस, पेपर होगा नहीं तो आपका ऑफिस में फाइल ले जाने वाला बाबू चला जाएगा, वो चपरासी चला जाएगा, डिस्पैच करने वाला आदमी चला जाएगा जो फाइलों की डिस्पैच करता है। करेंसी का कन्वर्जन होगा, करेंसी हमारी आज की डेट में है ना, मोबाइल पर है, हम लोग हैं, वो क्या करेगा, वो पेपर प्रिंटिंग बंद हो जाएगी, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, तो उधर अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा, उधर होगा, बट वी आर यूजिंग दीज टेक्नोलॉजी जो आपने 5 व्यू पे चले हैं, एआई, वीआर, एआर और आईओटी, 3D प्रिंटिंग, तो ये चीजें उसको सप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने जो आपको अपने साथ घटी घटना बताया वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का हम बोल रहे हैं कि दिस इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड। जैसे आज की डेट में आप देखिए, आप पहले न्यूज़पेपर आता था घर में, अब आप मोबाइल पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो हाकर है उसका क्या होगा, जो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े ऐड लेते हैं न्यूज़पेपर वाले, वो आपके सोशल मीडिया पे न्यूज़पेपर आएगा। अभी चुनाव आ रहा है, पंपलेट छपते थे लोग, पहले बिल्ला लेने के लिए लाइन लगा अभी वो सब चीजें आपके मोबाइल पर मिलने वाली। ये फेज 1 है, डिजिटाइजेशन जो हुआ है वो भी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का आउटकम। दूसरा, आपके रिटेल बिजनेस, इन सब में ये जो एआई है, इन सब चीजें आपने डिस्कस करी होंगी। रिटेल बिजनेस का क्या, वो पहले दुकानें हुआ करती थी, आप जाते सामान लेने, अभी आप मोबाइल पर सीधे आप दीजिए, वो आदमी जो आपको सामान सप्लाई कर रहा है वो कहाँ है वो आपको भी नहीं मालूम, वो कहीं से एक वो आदमी आएगा आपके सामने, पैकिंग बढ़िया सी पैकिंग लेके आएगा और आपको देके चला जाएगा। रिटेल बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारी चीजें कंसेप्ट में डोमिनेट करती है, कंसेप्ट जैसा होगा आपका और कंसेप्ट में आप टेक्नोलॉजी लगाओगे और इन्हीं सब चीजों से बढ़ेगा। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो, अगर आपने तो क्या डिस्कशन आपने इतने दिनों, एक दिन में इतने 300 पेपर में नहीं किया, बट जो आज की डेट में सोसाइटी को आउटकम जाने वाला है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में, वो है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय इमेजिनेशन, री इमर्जिंग ऑफ थॉट्स शुरू हो रहा है। एक ऐसा थॉट आएगा, री इमर्जिंग ऑफ थॉट्स। आप जैसे अभी मैं जब पीएचडी कर रहा था तो पावर सिस्टम स्टेट एस्टिमेशन पे 2006 में हमने न्यूरल नेटवर्क लगाया था। न्यूरल नेटवर्क ही आज एआई बन गया आपका। मुझे नहीं मालूम था कि 2006 में जो ये चीज हम पढ़ रहे हैं 2024 में आते आते इतना बृहद रूप ले लेगी। हमने सोचा किसी तरह से पेट छुड़ाओ भाई तो वो चीजें आज की डेट में, अब देखिए रीइमर्जिंग कैसे, एबिलिटी ऑफ रीइमर्जिंग इन द बिजनेस सेक्टर। उबर ने क्या किया, उबर के पास गाड़ी है नहीं, लेकिन उबर ने एक कंसेप्ट लेके आए कि एक बड़े बिजनेसमैन बन गए विदाउट ए सिंगल कार। जरूरी नहीं है, ये भी एक डिसरप्शन का नमूना है। मान लो एक टैक्सी ड्राइवर है या कोई ट्रेवल एजेंट है, उसके पास 10 गाड़ियां हैं, तो आज हर गाड़ी उबर की है, जिसके साथ उनका टाई अप हो गया वो उबर का मालिक हो गया, उबर मालिक हो गया, ओला मालिक हो गया। तो ये कंसेप्ट जो इमर्जिंग बिजनेस के लिए लेके आ रहे हैं, ये 3 फेज में हमारा डिसरप्शन चल रहा है इस समय। ये इसका पॉजिटिव आउटकम ये है कि हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यूजर देश हैं वर्ल्ड में, नंबर 1 है टेक्नोलॉजी यूज करने में, बट टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में हम पीछे, टेक्नोलॉजी क्रिएशन नहीं है हमारे पास। और बड़ा देश है, 140 करोड़, मैंने आपको नमूना बताया, छोटी छोटी कंपनियां हैं जो हमारी जीडीपी को के बराबर की जीडीपी रखती है। तो आज की डेट में सभी की जिम्मेदारी है, और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज करिए। इसको डिसरप्टिव बोलने के लिए तो किसी ने बोल दिया, अब वो चलता चला जा रहा है, वो इसलिए इसको कभी सोच नहीं रहे कि इसका नाम बदलना है। एक समय शुरू हो गया, मैं यूपी सीट देखना शुरू किया। एक मैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर था, जो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं बच्चे, तो हम लोगों ने 2002 में सोचा कि इसका सिलेबस बदला जाए। तो ये पता लगाया गया कि सिलेबस कहाँ से कब बना था, तो पता चला वो छोर ही नहीं मिला सिलेबस बना कर। हर साल जो दूसरा आता है उसको पेस्ट करके आगे बढ़ा देते, कभी सोचते नहीं। फिर अगली टीम आएगी, फिर उसी को कॉपी पेस्ट करेगी। ये नहीं हम देखना चाहते कि हमको बच्चे से क्या आउटकम चाहिए,
हम क्या बच्चे से निकाल के रखना चाहते हैं। तो आज इसका कंक्लूडिंग आपका सेशन है और पूरे संस्थान को बधाई। और जितने लोगों ने पेपर लाया, बस इस पेपर में मेरी जो विनम्र निवेदन है कि वो जो पेटेंट वाला फैक्टर है और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना जरूरी। एआई पे तो बात करते हैं हम लोग, एआई के साथ ईआई पे भी बात करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर आदमी बात कर रहा है। आर्टिफिशियल एक समय ऐसा आएगा जब टेक्निकली सब लोग बराबर हो जाएंगे। कोई एक समय आएगा, एक टेक्निकली सब लोग बराबर हो जाएंगे। तो आदमी को लीड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपका इमोशनल इंटेलिजेंस उस समय आगे आने वाला। एआई के साथ ईआई भी जरूरी है, इस पे सोचना आप लोग। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। जब एक समय, मैंने बताया ना आपको, एक समय आएगा सभी आप किसी टूल पे आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, आप जितना जानते हो उतना मैं भी जानता हूँ। तो उस समय इमोशनल इंटेलिजेंस, और ये समय नहीं है अदरवाइज वो भी बताता, लेकिन आप इसको पढ़ना। इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी है। हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात और या स्पिरिचुअल क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो विवाद का विषय है। बट ईआई पर जरूर फोकस करना है। और ईआई पे, ये तो पेपर तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, इसके साथ ऐड ऑन करना। और सभी पेपर जिनके भी आए हैं उनको बधाई, और पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, मैंने बताया ना इनका नाम नहीं है इसमें, उन सबको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। Thank you, sir, for such technical details on disruptive technology and words about Visit Bharat, are truly motivational and visionary for all of us. Now it's time to felicitate the authors for Best Paper Award under various categories. The Best Research Paper Award for their outstanding contribution goes to the paper ID 358, author Keshav Goyal, GLB ITM. I would request our Honorable Chief Guest, Sir, Professor J.P. Pandey, Sir, to felicitate the award. Give him a big round of applause. Congratulations. Moving on, the Best Research Paper Award in IEEE Women in Engineering for their exceptional contribution goes to the paper ID 717, author Madhulika, NSUT, New Delhi. I would request our respected guest of honor, Professor Prerna Gaur, to felicitate the award. Give her a big round of applause. Moving on, the Best Research Paper Award in the category of IEEE Young Professional for their outstanding contribution goes to the paper ID 1079, author Dayanand Sharma, Program Director, Ministry of Defence, Government of India. He is not here to receive the award, but we all congratulate to him. Now it's time to announce the winner of the poster presentation. Third position under this category goes to the paper ID 536, author Shalini Swami. I would request respected Dean Strategy, GLBITM, Dr. Prakash Avasthi, to felicitate the award. Give her a big round of applause. Thank you. Congratulations. Second position goes to the paper ID 447, author Aman Kumar Singh. Give him a big round of applause. First
position goes to the paper ID 682, author Aryan Singhal. Give him a big round of applause. Congratulations to all the winners. हाँ भाई टीम के लोग कौन है आइए आइए आ जाओ Congratulations to all the winners. Your innovative work has impressed us all and showcases the forefront of research in our field. Now it's time. Thank you, sir. Moving on, now it's time to honor our esteemed dignitaries. Now I would request Director GLDITM, Dr. Manas Kumar Mishra, to honor our respected chief guest, Professor J.P. Pandey, as a token of gratitude. थोड़ा सा पीछे Thank you, sir, for being with us. I would now request Dean Strategy, GLBITM, Dr. Shashank Awasthi, to felicitate our guest of honor, Professor Prenda Gaur, as a token of gratitude. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would now request our head of the department, Dr. Sansar Singh Chauhan, to felicitate next guest of honor, Professor Anurag Singh, as a token of gratitude. Thank you, sir, for being with us. I would now request Dean Student Welfare, Dr. Mahavir Singh Naruka, to felicitate our keynote speaker, Dr. Arun Sharma, as a token of gratitude. Thank you, sir, for being with us. I would now request Head Media, Ms. Aarti Khandelwal, to felicitate our distinguished guest, Mrs. Saroj Pandey ma'am, as a token of gratitude.
Thank you, ma'am, for being with us. I would now request Head Planning, Dr. Ruth Pratap Kocha, to felicitate our distinguished guest, Mr. Rajendra Sharma, as a token of gratitude. Thank you, sir, for being with us. I would now request Head IT, Dr. P.C. Vashish, to felicitate our distinguished guest, Dr. Arunesh Kumar Singh, Department of Electric Engineering, Jamia Millia Islamia, Central University, New Delhi. I would now request Dean Applied Computer Science and Engineering to felicitate our distinguished guest, Professor Shailesh Tiwari, Additional Director, Kite Group of Institutions. Thank you, sir, for being with us. I would now request our respected Conference Secretary, Dean Strategy, GLBITN, Dr. Shashank Awasthi, to deliver the vote of thanks. Namaskar, everyone gathered here on the rise of the rise. First, I would like to express our profound gratitude to our chief guest for the day, Professor Dr. J.P. Pandey, Honorable Vice Chancellor, AKTU Lucknow. Your esteemed presence enlightens us, sir, for this to elevate this conference. सर को देखने के बाद जब मैं बहुत छोटा था, जब टीचिंग लाइन में, तो मैं सर का जो मैंने पूरा वो देखा है, उसके हिसाब से मैंने कुछ लाइनें मैं सर के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं तूफानों में चलने का आदमी, मैं तूफानों में चलने का आदमी हूँ, तू मत मेरी मंजिल आसान करो। हैं फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, हैं फूल रोकते कांटे मुझे चलाते, मर्दर पहाड़ मेरे चलने की चाह बढ़ाते, सच कहता हूँ जब मुश्किल ना होती तो मेरे पग थक जाते हैं, मैं तूफानों में चलने का आदमी हूँ, तो मत मेरी मंजिल आसान। अभी मैं सर की बात सुन रहा था, आज हर एक भारतवासी का सपना है कि वो विकसित भारत की तरफ चले। हमें आशा नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि सर के नेतृत्व में डॉक्टर एपीजे कलाम टेक्निकल विश्वविद्यालय, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, in line with the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for a Viksit Bharat by 2047, I assure you, sir, this conference has aimed to contribute the realization of developed India through the lens of disruptive technology. Our discussion and deliberations have echoed the Prime Minister's call for the innovation, technology and entrepreneurship as a drivers for the prosperous and Atmanirbhar Bharat. I will assure you, sir, that institute and the university, under your guidance, this institute will contribute at their level best, sir. जब हम अनुसंधान की बात करते हैं, तो अनुसंधान में जब हम अभी तो हम लोग थोड़े एक्सपीरियंस हो गए, जब हम एक तरीके से फ्रेशर होते हैं, और जब अनुसंधान की बात करते हैं तो न्यूटन ने कहा था कि हमारी स्थिति उस बच्चे की तरीके होती है जो समुद्र के किनारे खड़ा होता है और उसके सामने बहुत सी चिकनी और छोटे छोटे कंकड़ पड़े होते हैं, सीप उन कंकड़ों में से वो सीप ढूंढने का प्रयास करता है, लेकिन वो बालक ये नहीं देख पाता कि सत्य का एक महासागर समुद्र के रूप में, उसके अथाह महासागर जो उसके सामने खड़ा हुआ है, हमें उसमें से वो मोती निकालने हैं। यही अनुसंधान होता है सर, यही अनुसंधान होता है। आज हमारा भारतवर्ष का नौजवान बीटेक कर लेता है, एमटेक कर लेता है या बायोलॉजी जो भी जिस स्ट्रीम में जाता है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें एक अच्छी सी डिग्री प्राप्त करनी है 75% मार्क्स 70% मार्क्स के साथ, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट या विप्रो जैसी कंपनी में काम करना है। अगर हम यही सोचते रहते तो अनुसंधान क्या, अनुसंधान ये कि चांद के रहस्यों का हमें पता लगाना,
वो रहस्यों का पता हम नहीं लगा पाते अगर हम केवल नौकरी के बारे में सोचते। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, जैसा सर ने कहा कि हमें विकसित भारत बनना है, तो इन सब चीजों के लिए हमें अपने आप को सुदृढ़ बनाना होगा। निश्चित रूप से सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ और हम आपको एश्योर करते हैं कि हम इस दिशा में आगे काम करते हैं। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ आवर गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर प्रेरणा गौर जी, जो हम कह सकते हैं कि वुमेन, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वुमेन एम्पावरमेंट का सपना है, मुझे लगता है कि वो सपना भी साकार हो रहा है। माननीय प्रेरणा गौर जी आज हमारे मध्य हैं और इन्होंने जो आपका मैडम ने जो विचार हमारे सामने व्यक्त किए, निश्चित रूप से हम उनके विचारों से सहमत हैं और हम आगे उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ श्री प्रोफेसर अनुराग शर्मा सर का, अरुण शर्मा सर का, अरुणेश जी का, और जो नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ उन सभी लोगों का मैं यहाँ पे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इसी तरीके से हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और हमारी कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते रहें। मैं अपनी बात लास्ट उसके साथ कह के खत्म करता हूँ कि लेट अस कंक्लूड, I want to conclude my word. Drive with the lines, drive forward with the spirit of innovation. Drive forward with the spirit of innovation, echoing our conference call to innovate, disrupt, and lead. Thank you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat. Now I would request all of you to please stand up for the national anthem. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, everyone. As we draw near the end of this incredible journey, I want to extend my heartfelt gratitude to our esteemed dignitaries and speakers who illuminated our minds and inspired us to reach new